Good afternoon, friends. I welcome you all on behalf of Press Information Bureau, Bhubaneswar, to this press conference. My apologies to you for the delay in starting this, but we are now all set to go. I'm sharing the dais here with me. Are on my right, Mr. K. Sanjay Murthy, he's Secretary, Higher Education. Next to him is Mr. Sanjay Kumar, who is Secretary, School Education and Literacy. And next to him is Mr. Atul Kumar Tiwari, who is Secretary, Skill Development and Entrepreneurship. As you know, the precursor events to the G20 Third Education Working Group already started. On 23rd, that is Sunday, was the opening of the Future of Work exhibition, as well as a conference on deep tech with focus on advanced technology in the future of work. And next day was the conference on transforming logistics for coastal economies with focus on sustainability. And yesterday was this morning was the meeting on skill architecture and governance models of India and Singapore. So against this background and the background of the G20 Education Working Group meeting, which starts tomorrow, we are holding this press conference. So I'll start with first asking the three secretaries here to make their opening remarks, beginning with Mr. K. Sanjay Murthy. Thank you, Bhupinder. Welcome everyone for this press conference. Just as a brief introduction, just wanted to put the context in which these meetings are being held. While the first one we had was in Chennai was pertaining to EdTech learning. The second meeting was in Amritsar, which was on research and better collaboration. The one in Bhubaneswar pertains to future of work. And this context in which we are having these discussions as that each of these themes feeds into the working group's discussions. So while the one in Chennai was on tech-enabled learning, Amritsar it was research. The one that will be focused in the working group meetings to be held from tomorrow onwards will be focusing on future of work. The recommendations, the best practices which come out from the discussions with all the G20 plus countries feed into the discussions of the working group meeting. And this being the third meeting, greater deliberations about drafting of the declaration will be done. So therefore, fine tuning of the draft declaration will be deliberated upon based on the inputs and the consensus that we have got over the past three meetings, which will be the one which is there in Bhubaneswar. I'll just request my other colleagues to expand on the works that they are doing on, especially pertaining to future of work. Thank you very much and namaskar. As Mr. Murthy has explained the general context under which the G20 meetings, particularly the Education Working Group, is held, I would like to confine myself to the precursor events that have been taking place in Bhubaneswar right from 23rd onwards. Actually, as our Honorable Minister has indicated, that in line with the Prime Minister's call for Jan Bhagidari, we have started the G20 events across the state of Odisha from the Utkal Diva, that is the 1st of April itself. And we have organized various events, etc., so that the people will be, the students will take part in that, and the G20 also becomes relevant to them. And so far we are happy to note that more than 1 lakh such students, academia and others have taken part in these discussions around G20 education, and particularly with the future of the work. And as a precursor event on 23rd, as you know, on the
IMMT campus. We have launched our exhibition, and I will take this opportunity to invite all our media friends also to make a visit. Last 2 days it has happened, and we already have more than 22,000 people, and particularly students, participating in that. So that is also in the context of the future of the work. And today, as first day, we had a meeting on the deep tech, and yesterday we had about the logistics in the context of the coastal economy with a focus on sustainability. And today we had a skill architecture and governance model of India and Singapore. And all this will also lead us to define, draft a kind of resolutions which would be based on the Jan Bhagidari concept, and it will be useful to us insofar as the idea of the future of work is not only discussed at the G20 level, but is also being discussed and agreed or deliberated by the common people. And tomorrow we have the 26th, we have the first seminar, precursor seminar of the Education Working Group meeting, which will be again on the building capacities, promoting lifelong learning in the context of the future of the work. It will happen as CSIR IMT. We also expect to take the G20 delegates and show them the exhibition, and that will be, this will be a seminar is a kind of a warm-up activity for the G20 closed-door session, which will happen on 27 and 28. Thank you very much. धन्यवाद भूपेंद्र जी, सचिव उच्च शिक्षा, हमारे सहयोगी सचिव कौशल विकास एवं उद्यमिता। तो आज की जो बैठक है और कल से जो G20 की जो तीसरी एजुकेशनल वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है, उसके बारे में हमारे दोनों सहयोगियों ने आपको बताया। आज सुबह से हम लोग सिंगापुर सरकार के उनके राजदूत थे और उनकी उच्च शिक्षा टीम आई हुई थी, कौशल की भी टीम आई हुई थी, और इन बातों पर चर्चा हो रही थी कि हम सिंगापुर के साथ आपस में क्या कुछ कर सकते हैं, किस प्रकार से विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है, ताकि सिंगापुर ने जो निपुणता हासिल की है अपने स्कूल करिकुलम में और स्कूल करिकुलम के बाहर, किस प्रकार से कौशल को लोगों के बीच में विकसित किया जाए। और ये जो कौशल जो निरंतर बदलता रहता है, क्योंकि हमारे जो मार्केट के रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बदलती रहती हैं, तो किस प्रकार से जिसको कहते हैं स्किलिंग करके बाद फिर हम रीस्किलिंग करें, और उसको एक अप स्किलिंग भी कहते हैं, ताकि जो आपने कौशल प्राप्त किया है उसमें कैसे आप उसको और सुदृढ़ बना सके और उसमें कैसे मार्केट के अनुसार चीज़ों को विकसित किया जा सके। हम लोग जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से हैं, हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने स्कूल के जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें कौशल को कैसे शामिल कर सकें। ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है, और इसको बाहरी मुल्क जैसे सिंगापुर किस प्रकार से कर रहे हैं उसका अध्ययन करके हम उसे बेहतर रूप से कर सकें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में पहले हम 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में ये जो 4 क्लासेस हैं, इसमें हम कौशल के पाठ्यक्रमों को हम लोगों ने शामिल किया था। लेकिन अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि अब कौशल विकास को 6ठी कक्षा से ही चालू किया जाना है। तो अब हम 6ठी, 7वीं, 8वीं और 12 तक करेंगे। और जो नेशनल क्रेडिट रेटिंग फ्रेमवर्क भी लाई गई है, किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं किया जाना है। सो जैसे कि साइंस का स्ट्रीम है, ह्यूमैनिटीज़ का स्ट्रीम है, स्पोर्ट्स है, फिज़िकल एजुकेशन है, आर्ट्स है और वोकेशनल एजुकेशन है, इन सब चीज़ों में किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं किया जाना है। और जिस प्रकार से आप
शैक्षणिक चीज़ों के लिए आप क्रेडिट प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से आपको वोकेशनल एजुकेशन के तहत भी आपको क्रेडिट मिलेगा। तो ये जो फ़र्क है दोनों के बीच में, इस फ़र्क को पूरी तरीके से हटाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए एक जो आम मानस है, जिनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, उनमें उनके मानस में भी वोकेशनल एजुकेशन के प्रति बदलाव लाने की ज़रूरत है, ताकि हाथ से जो हम काम करते हैं उसको भी उतनी ही प्रतिष्ठा और उतनी ही सोशल एस्टीम हम दे सकें। ये बात हम लोगों के लिए बहुत ही अहम है और आवश्यक भी है। तो आज इस बिंदु पर व्यापक चर्चा हुई है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो 3rd एजुकेशनल वर्किंग ग्रुप है, इसके पश्चात जो 4th एजुकेशनल वर्किंग ग्रुप है वो पुणे में आयोजित की जाएगी और उसके लिए जो डेट हैं वो हैं 20 और 21 जून। लेकिन उसके पहले 19 जून को हम फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, जो एनईपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है, उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हर चीज़ की शुरुआत सबसे शुरू से होती है और शुरुआत बुलंद रहे तो उस पर जो इमारत बनाई जा सकती है वो कहीं ना कहीं बेहतर बन सकती है। तो ये जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है, जो वर्ष 3 से लेकर के 8 तक के बीच में हमारे छात्र और छात्राओं को प्राप्त किया जाना है, ये हमारे लिए बहुत ही अहम है। मातृभाषा में किस प्रकार से इसको मदर टंग में हम इसको दें, किस प्रकार से बच्चा खेलते खेलते पढ़े और ये महसूस न कर सके कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा बर्डन है, कोई प्रेशर है। और इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम लोग नया करिकुलम फ्रेमवर्क पाठ्यक्रम बना रहे हैं और उस पाठ्यक्रम के क्रम में जो नई किताबें बनाई जाएंगी तो उसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके जो प्रमुख कंपोनेंट्स हैं वो उसमें परिलक्षित होंगे। तो मैं एक बार फिर आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और यदि किसी प्रकार का कोई प्रश्न होगा तो हमें बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद। जो कोई भी प्रश्न पूछे अपना परिचय भी दें, अपने संगठन का नाम भी बताएं और उसके बाद प्रश्न पूछें। सर, मैं द्युति कृष्णा पही, न्यूज़ 7 टीवी से, रीजनल टीवी। मेरा ये सवाल है कि सिंगापुर की जो भी एजुकेशन पॉलिसी है उसे आप सोच रहे हैं और बाकी जो भी देश है, अर्जेंटीना, जापान, खास करके जापान, उनका जो पढ़ाने का तरीका है स्कूल में, कॉलेज में, हम सब जानते हैं, यूट्यूब में भी देखते हैं और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ से जाके वहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, उसका रिजल्ट भी आ रहा है। उसके बारे में भी कुछ ऐसे सोच रहे हैं सर, जापान के बारे में, और उनका मॉडल जो भी हो? नहीं, आज तो सिंगापुर के साथ एक कार्यशाला की गई थी, लेकिन आपने 2 देशों के नाम लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि G20 में ये दोनों ही देश शामिल हैं, अर्जेंटीना भी शामिल है और जापान भी शामिल है। और पहले, दूसरे, तीसरे और ख़ासकर जब चौथी जो पुणे में बात होगी तो उनके साथ इस बिंदु पर बृहत रूप से परिचर्चा की जा रही है कि उनकी स्कूली शिक्षा में किस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं, किस प्रकार से वो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी कर रहे हैं, किस प्रकार से वो अपने स्कूलों में, विद्यालयों में स्किलिंग को कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और G20 का एक जो प्लेटफॉर्म है, ये आपस के अनुभवों को साझा करने के लिए और एक दूसरे से सीखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है और इसको हम लोग कर रहे हैं। ये दूसरा, इसके अलावा ये हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से काफ़ी जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी शामिल हैं। तो इसमें जो एक टॉपिक हम बता रहे हैं, रिसर्च एंड कोलैबोरेशन, रिचर कोलैबोरेशन, इसको और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी ये चर्चा इस वर्किंग ग्रुप्स में हो रही है। बट उदाहरण के लिए काफ़ी IITs, काफ़ी इंस्टीट्यूशंस, BHU, जो कंट्रीज़ आपने नाम लिए हैं, उसके साथ काफ़ी जॉइंट डिग्रीज और जॉइंट PhDs का काफ़ी प्रोग्राम्स चली हैं, जिसको हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर, ये मैं जजाति मोहंती हूँ, नंदीघोष टीवी से। संजय जी से ये जानना चाहेंगे सर, ये अच्छी बात है देशवासी के लिए कि हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये जानना चाहेंगे रिमोट में, गाँव में ये सब चलाने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी जोर दिया जाएगा क्या?
किस संजय से आपने ये प्रश्न पूछा है? नहीं, बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है आपका। और इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बेहतर करने की आवश्यकता है ही, क्योंकि यदि वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हमें वोकेशनल एजुकेशन के लिए जो कुछ इक्विपमेंट चाहिए, ट्रेनर चाहिए, इनको हमारे विद्यालयों में लाने की ज़रूरत है। और ये सब नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत लाया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने स्कूलों में हब और स्पोक मॉडल के थ्रू बहुत से विद्यालयों में स्किल हब्स कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से हम लोग बनाएंगे। और ये एक अच्छा मौका है कि तीनों ही विभागों के बीच में पारस्परिक सामंजस्य शामिल होगा और आधारभूत संरचनाओं को हम बेहतर कर पाएंगे। मैं इनके आगे थोड़ा सा बता दूंगा। जैसा अभी बताया, हमारे पास ये एक स्वयं प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो पॉलिसी यूजीसी की जो गाइडलाइन है या एआईसीटी का गाइडलाइन है, 40% की क्रेडिट्स आप उस प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। सो किसी इंस्टीट्यूशन के पास, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास मान लो किसी एक्सपर्टीज़ नहीं है या किसी डिसिप्लिन के बारे में बताने के लिए फैकल्टी नहीं है, ये जो प्रोग्राम स्वयं प्लेटफॉर्म में है वो उस प्लेटफॉर्म से लेके बच्चे को वो स्किल्स अपग्रेड कर सकता है और टेस्टिंग भी उसी तरह से होती है। और वो प्लेटफॉर्म पे पूरे आईआईटीज़ के प्रोफेसर्स, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स के माध्यम से चलाई जाती हैं। आज की डेट में करीबन 6 लाख बच्चे ये सर्टिफिकेट्स लेके अपना स्किल और कॉम्पिटेंसीज बढ़ा रहे हैं। तो उसी तरह का रिमोट एरिया में ये एक प्रावधान है जिसके ऊपर हो सकता है। सर जी नमस्ते। सर जी नमस्ते, मैं दुष्मंत कुमार बेहरा, न्यूज़ 18 उड़िया से। मेरा सवाल है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक स्टॉल लगा हुआ है वहाँ पर G20 जहाँ पर स्टॉल है, और वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में क्या प्रोसेस चल रहा है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जैसे कि वैदिक मैथमेटिक्स है, उसके बारे में किस तरह की रिसर्च हो रहा है और G20 में कुछ प्रोजेक्ट है क्या? मैं आपको स्कूली शिक्षा के बारे में ये कहना चाहूँगा कि अभी जो पाठ्यक्रम बनाए जा रही हैं, जिसके तहत एक पूरी बाल वाटिका 1 से लेकर के 12 क्लास की पुस्तिकाएं बनाई जाएंगी, तो उसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को, जिसमें वैदिक मैथमेटिक्स जिसका आपने उल्लेख किया, वो शामिल है। तो ये जब 7-8 महीने के अंदर जब किताबें आएंगी तो आप उसको देख पाएंगे कि किस प्रकार से इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को हमारे स्कूल के छात्र और छात्राओं के लिए विकसित किया गया है। Atul sir, Manas from Times of India. Sir, those 2 questions I have. One is about the international collaborations, like which are the countries that for skilling that the ministry is planning, and also about skilling of the youths in the border areas. So any specific plan that you can share with us that the ministry is thinking about? Manas, certainly it is not related to the G20. Would you like me to answer offline to you, one-to-one? Right, thank you. Hello. Sir, this is Kritika Sharma from The Print. My question is related to the Singapore-India discussions. You said that there were discussions related to skilling in schools and higher education as well. But Murthy sir, you mentioned that there are research projects that are already going on between universities. But are we going to see similar collaborations in schools? Will there be something where school children from the 2 countries will be working on projects, or will there be some kind of interaction between the boards of the 2 countries, internationalization there? What is the collaboration in terms of, if not MOUs, so what is the kind of collaborations that we're going to see in the future? स्कूल कोलैबोरेशन के सिंगापुर के साथ तो ऐसा कोई खास इस बिंदु पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन हम ऑलरेडी दूसरे देश हैं जिनके साथ हम इस प्रकार का कोलैबोरेशन करते हैं। जैसे हम जापान के साथ करते हैं, उनका एक सकूरा उनकी योजना चलती है, और अभी कजाकिस्तान में भी वो ओलंपियाड कर रहे हैं, तो उसमें भी हम उनके साथ हिस्सा ले रहे हैं। तो यदि भविष्य में यदि सिंगापुर के साथ भी किसी प्रकार की कोई
इस तरह की आदान प्रदान की बात हो तो उस पर विचार किया जा सकेगा। Kritika ji, you have been insisting that there should be some instrument, and I recall you were there when Honorable Minister Mr. Pradhan explained in great detail what are the reasons why which we are trying to collaborate with the Singapore side for our skilling and education. And this is also in the as a sidelines of the G20, because Singapore also is a G20 member, and G20 is a multilateral forum. This is a bilateral forum, and it's a good thing that the G20 is providing us a context also to connect bilaterally with them. And we would also explain the reasons why Singapore is a strategic partner for India, what all these, like the ISRO thing and the UPI payment platform and other things which have been mentioned. And there is also a lot of interest from Indian side on the Singapore skilling system, which has been there spread over the different provinces. We'd like to have a more, what shall I say, holistic approach embedded in our education and skilling policy, so that it is easier for us to integrate both of them. सर नमस्कार, आई एम सुधीर, एडिटर ऑफ भोकिला पेटो। सर मुझे बहुत दुख हो रहा है जो मैं एक गरीब राज्य में जन्म हुआ, गरीब राज्य में बढ़ रहा हूँ, गरीब राज्य में मरूंगा आगे, बहुत दुख है। इसीलिए सर मेरा आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है। सो आप ऐसे इतना बढ़िया पॉलिसी बनाओ जैसे सर उड़ीसा एक नंबर स्टेट हो सकता है इंडिया में। सर मैं सर बहुत दुख से आपसे बोल रहा हूँ सर। थैंक यू सर। आप सर बना दीजिए सर, प्लीज बना दीजिए, एक नंबर स्टेट को करो सर। सर मेरा आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है फ्रॉम उड़ीसा टू दिल्ली, वेयर आई यूज्ड टू गो, पीपल यूज्ड टू स्पीक दैट यू बिलोंग टू पुअर स्टेट। सर कितने दिन पुअर, अच्छा नहीं लग रहा है ना, हम ह्यूमन बीइंग। सो काइंडली कोऑपरेट, काइंडली डू समथिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट सर, प्लीज, थ्रू एजुकेशन। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको ऐसा क्यों भ्रम हो रहा है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बात कर रहा है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, झारखंड उड़ीसा से बढ़िया है कि खराब है? वैसा कुछ नहीं होता। सारे देश प्रोविंसेस में बटा हुआ, सारे प्रोविंसेस अलग अलग कल्चर ट्रेडिशंस हैं। जो अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लेके आया गया है उसके अंतर्गत हम वही करना चाह रहे हैं कि कैसे स्किलिंग और एजुकेशन को साथ लाएं, कैसे लोकल नॉलेज सिस्टम जो हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम उसको हम आगे लेके आएँ, कैसे अपनी जो विविधताएं उसको हम सम्मिलित करते हुए एक दूसरे दृष्टि की ओर लेके हम जाएं। इसलिए आप पूरा विश्वास रखें, जो भी पॉलिसी जो बनी हुई है उसका कार्यान्वयन हम करेंगे, ताकि हम सब लोग की, चाहे उड़िया हो, झारखंडी हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, सबकी अस्मिता बरकरार रहे। ठीक है, यह मैं आश्वासन सरकार की ओर से आपको देना चाहूँगा। सर लेकिन थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। बीइंग ए पुअर स्टेट, कौन कहता है उड़ीसा पुअर स्टेट है? सर आप जहाँ जाओगे, सर मैं उड़ीसा से बाहर दिल में फ्रेंड है यार, सारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तमाम तरह के राज्यों का ख्याल रखा गया है। आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहे हैं। आप भरोसा रखिए हमारे पर, आप भरोसा रखिए सर। सर काइंडली डू समथिंग। Certainly, I am with you. Sir, this is Gunjan Sharma from PTI Delhi. I wanted to ask, we've recently notified the National Credit Framework, which also talks about giving credits to school education, which can be integrated later. But when we will talk about the learnings from the G20 forum that we are talking about integrating both school and skilling education, will we see some changes in the credit framework also? Will that be revised accordingly, depending upon the learnings from the G20 forum, or whatever outcomes come out of it? No, if I understand your question, you're saying that the because of G20, whether there will be change in credit framework. That's what you're trying to say? The skilling part, when we are talking about formalizing skilling in the schooling system, will we see certain changes in the credit framework also, or will it remain the way it has been? No, first one, let me try to give you some idea. The skilling and education coming together is part of the national education policy. National credit framework is the one method whereby on the basis of the credit, the skilling part and educational part are made equivalent. They are brought on the same line.
G20 is a multilateral things, and whatever we're doing with NEP or trade framework is our internal thing. So it will be presumptuous on my side to say that G20 discussion will lead some impact on the trade framework, because it's already notified. We had gone through, as Mr. Murthy would assert, we had done a huge round of stakeholder consultations. It's a multi-ministerial discussion. We had consulted academia, students, industry, all put together, and this has put in place. And I don't foresee that there will be any changes on the trade framework or the skilling side, which we are embedding on our national education policy. And I kuch add karna chahe. I mean, this is a framework, right? It gives you the way forward on how to recognize different skills or experiences that a child has gained over his life cycle. So it is now dependent on, incumbent on different organizations and institutions. Like you might have seen, last week we had the IIT Council meeting. Now they have adopted the NCRF in principle. Now it is up to the body of IITs to give a value to all those sets of skills that they want to take. And that is the thing that they will carry forward from the school sector and from the skill sector into their, framework in which they are going to notify amongst their institutions. So it's not a question about whether this discussion in G20 is going to change my framework. Only thing that might happen is that if we do come across skills that G20 is recognizing, because we are talking about future of work, if it is not there in our horizon, we might come to know that this is a skill that they have captured in this particular format and needs to be recognized while we are doing the same in our educational institutions. Any more questions? सर मैं न्यूज़ 7 से द्युति कृष्णा पही इससे पहले मैं सवाल पूछ सकता हूँ सर। ये मेरा पूछना है कि सऊदी अरेबिया जो काफ़ी तेज़ी से सर आगे जा रहा है, उसका तेल भी कम हो रहा है, इसके लिए वो लाइन सिटी बना रहा है सर, आपको भी सर पता होगा। ऐसा कुछ प्लान है क्या सर? पूरा इंडिया में पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ ऐसे कुछ हम बनाएंगे। सर तो मुस्कुरा रहे हैं सर। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि G20 का भी डिस्कशन के लिए रखा हमने। आप हमसे वन लाइन में बताओ, मैं क्या कर रहा हूँ, बताऊंगा आपको। नहीं सर, कुछ ऐसे जो भी टेक्नोलॉजी हमारा आ रहा है, उस टेक्नोलॉजी को लेके कोई सिटी में अगर ऐसे इम्प्लीमेंट कर सके, कुछ तरक्की हो सके, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी होगा उसको यूज कर सके वहाँ पे, ऐसा कुछ सर प्लान है क्या सर? आज की परिचर्चा से ये नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, यदि आप थोड़ी सी अपनी नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि सारी चीज़ें हो रही हैं। चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो, चाहे वो स्मार्ट सिटीज़ की बात हो, या आप नहीं सर, हो रहा है सर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ सर, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर भुवनेश्वर में ऐसे कुछ होगा, पूरा भुवनेश्वर जैसे मतलब बनेगा, दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, ऐसे कुछ सिटी को बनाना पड़ेगा सर। मतलब कुछ ऐसा प्लान है क्या फ्यूचर में? हो रहा है सर, सब कुछ हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये सब कर रहे हैं, लेकिन फोकस करना चाहिए। चलिए, थैंक यू। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और यहाँ पर प्लीज़ जॉइन अस फॉर लाइट रिफ्रेशमेंट्स आफ्टर दिस। थैंक यू वेरी मच।